Yes, good afternoon, students. This is CA Rajeev Sachdeva here. Your mentor for the. I am going to take intermediate auditing and assurance paper 6. In last lecture, remember we had discussed appointment of auditors. The topic in company audit, appointment of auditors was discussed. And today we will discuss section 140, section 141 and section 142. So a student is asking how remuneration of an Sitesh Lal is asking how remuneration of an auditor is decided. Yes, I will answer this question under section 142 of the Companies Act 2013. Now I move to PPT. Yes, you may note the disclaimer. Students are advised to refer to the study material, including supplementary and other relevant legislations for latest provisions, amendments required for forthcoming examination. Do remember that for relevant notified sections of the Companies Act 2013 and other legislative amendments, including notifications, circulars, rules, guidelines issued by regulating authorities, students' cutoff date will be 31st October 2015. It means 31st October 2015 तक जो भी Companies Act amended होगा, rules, circulars, notification होंगे, काम May 16 के अंदर आएगा. Please remember this. And CARO is very much applicable for your May 16 examination. Students, we have been receiving through mails what are the changes in syllabus and what is new in auditing. So you may refer list of pronouncements which is very much hosted on the website. Essays, you all know essay 200 up to 720. Another addition which we have made in this attempt is a guidance note on reporting under section 143(3)(f) and H of the Companies Act. 8th point, guidance note on reporting under section 143(3)(f) and H of the Companies Act has been added. How to handle? In last lecture, please remember, याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था कि लॉ को कैसे पढ़ें. How to handle law related questions. स्टूडेंट्स, लॉ में आप एक बात याद रखिए हमेशा कि प्रोविजंस ऑफ द कंपनी ऑडिट, वट एवर लॉ यू हैव बीन स्टडिंग, जो भी मर्जी आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप लॉ में लर्निंग जरूर करिए. लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं आपको क्रैम करने कह रहा, डू नॉट क्रैम. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द लॉ and then learn. Understanding, first you understand the law and then learn. This is called constructive learning. I am not asking you to cram the law. So provisions in any law, be it company law, income tax law or any other law, you need to learn.
Learning is very crucial, as I had already stated in my previous lecture. Try to understand the intention of the law. Students, in every law there is intention of the lawmakers. You need to study what the law intend to say, what the law wanted to convey. क्या कहना चाहते थे लॉ मेकर्स while enacting the law? लॉ बनाते समय लॉ मेकर क्या कहना चाहते थे? This is called the intention of the law. You need to understand. Plus, learning is very important. And while you write your answers, intention of the law should not be missing while writing your answers. जब भी आप लिखें तो intention of the lawmakers, that should not be missing. So 3 points you need to remember. आप learning जरूर करें, understand करें कि intention of the lawmakers क्या थी और उसे अपने answers के अंदर भी incorporate करने की कोशिश करें. This is very important. 3 points I have stated. Students, this is very important while studying law. In any law, as discussed in the last lecture, after learning, translate your knowledge into brief notes. Brief notes at the end of the day, से आपने 4 sections कर लिए, तो उसके brief notes जरूर बनाइए. So translate your knowledge into brief notes. Brief notes आप diagrams की भी help ले सकते हैं. And at later stage of preparation, आपका टाइम कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा. 2 चीजों में आपको बेनिफिट होगा अगर आप नोट्स बनाएंगे. तो it would require minimum time and minimum effort at later stage. So brief notes you all need to prepare. Brief notes students बनाने का तरीका ये है, जिस दिन आपने प्रिपेयर कर लिया, जो भी सेक्शन आपने प्रिपेयर कर लिया, उसको शाम को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए. इवनिंग एट द एंड ऑफ द डे से आपने 4 सेक्शन एक दिन में लर्न कर लिए, तो चारों सेक्शन लिस्ट है वो आप कहीं पर लिख लीजिए. सो उसको मैच कर लीजिए, कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है. दैट विल वर्क एज ब्रीफ नोट्स. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पीपीटी के अंदर आपको ब्रीफ नोट्स बनाने सिखाए थे लास्ट लेक्चर में, एंड इन दिस लेक्चर 2 मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रीफ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं. सो ब्रीफ नोट्स आप बनाना सीख लीजिए मेरे से, और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. जो भी आपको पसंद आए, अच्छा लगे, वो नोट डाउन कर लीजिए. सो ब्रीफ, you have to translate your knowledge into brief notes. This is very important point in the examination. लास्ट लेक्चर में याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ब्रीफली मैं आपको उसका समरी बता रहा हूं. 139(1), नॉट द फुल सेक्शन, ब्रीफली बता रहा हूं कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स. Appointment of first auditors of both in case of a non-government company as well as of a government company. Appointment of subsequent auditor of a non-government company and subsequent auditor of a government company. Students, you may question number 46 in the practice manual, July 2015 edition, जिसमें कि ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया. आपको अच्छी तरह से करना चाहिए क्वेश्चन. लास्ट लेक्चर में भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था. Appointment of auditors is divided basically into 2 groups, 2 broad headings: appointment of first auditors and subsequent auditors. First auditor of a non-government company. Please remember last lecture में क्या डिस्कस किया था. Within 30 days from the date of registration of the company, the first auditor of a company which is other than in case of other than government company के प्रोविजन अलग है. Within 30, they are appointed within 30 days from the date of registration of the company.
And if there is failure on the part of the board to appoint its auditors, it shall inform the members of the company. Important point आप यहां पर note कीजिए, it is a duty, it becomes duty of the board to inform the members of the company in the event they fail to appoint the auditor. So it is the duty of the board to inform the members of the company, and the members of the company in turn shall within 30 days at an EGM, they will have to call an EGM and then appoint the auditor. And auditor shall hold office till the conclusion of first AGM. ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. जिन्होंने नहीं अटेंड किया था लास्ट लेक्चर, अभी आप ब्रीफ समरी तो देख ही सकते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी. Appointment of first auditor of government company. In case of a government company, first auditor would be appointed by the, in case of a government company, first auditor shall be appointed by the CAG of India within 60 days from the registration of the company. So in the case of a government company, section 139(7) provides that in case of a company or government related company, the first auditor shall be appointed by the CAG of India within 60 days from the date of registration of the company. And if CAG, in case CAG does not appoint, then the board will appoint in next 30 days. Within next 30 days, board of directors will appoint the auditor. In case there is failure to appoint such auditor failure on the part of the board to appoint such auditors within next 30 days, again the duty of the board of directors will be to inform the members of the company, and members in turn shall call an EGM and appoint the auditor within 16 days. Within 60 days at an EGM, auditor so appointed shall hold office till the conclusion of the first AGM. This was discussed in the last lecture in detail. Appointment of subsequent auditors. याद कीजिए हमने क्या कहा था. Section 139(1). We had started with 139(1). कि every company will have, every company में मैंने बहुत स्ट्रेस किया था, every company, it becomes the duty of the every company to appoint its auditor. And this is mandatory. Shall indicates mandatory. Shall is our always mandatory. Students, shall हमेशा mandatory होता है. Whenever it appears in any law, shall mandatory होगा और may discretionary होता है. If there appears may, तो discretionary है. आप वो काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. Option दी गई है. But shall is always mandatory. So as per section 139(1) of the Companies Act 2013, every company, this becomes the duty of every company at the first AGM itself. At the first AGM, appoint an individual or a firm. Chartered accountant may, who is going to be appointed may be an individual or a firm. Examples याद है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल्स से बताया था कि इंडिविजुअल फर्म ऑफ चार्टर्ड, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे अपॉइंट होएगा, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे अपॉइंट होएगी. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विद एग्जांपल्स कन्वे किया था. So who shall hold from the conclusion of that meeting and that meeting is the first meeting till the conclusion of 6th AGM, and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. Appointment of subsequent auditor of a government company. And subsequent auditors, this is governed by section 139(5) of the Companies Act. In case of a government company or any other company owned by, means government company, in case of a government company or any other company which is controlled by the government, within a period of 180 days from the commencement of the financial year, and who shall hold office till the conclusion of the AGM. ये last lecture को मैंने थोड़ा सा brief किया students आपको. So this is what we did in the last lecture. Now I move to section 140 of the Companies Act.
that is removal, resignation of auditor and giving of special notice. Very important students from examination point of view. Section 140 subsection 1 within brackets, मैंने लेक्चर में भी बताया था, आपको याद होगा, जो हम विद इन ब्रैकेट्स लिखते हैं that is called subsection. According to sections 140 subsection 1, the auditor who is appointed under section 139, auditor appointed under section 139 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, अभी मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है. तो सेक्शन 141 की ओपनिंग लाइन क्या है स्टूडेंट्स? The auditor appointed under section 139 may be removed, यहां पे हमने यूज किया may be removed from his office before the expiry of his term. उसकी टर्म खत्म होने से पहले आप हटा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास. So opening line of section 140 subsection 1 states that the auditor appointed under section 139, which is validly appointed under section 1, मतलब जो अपॉइंटमेंट है वो एक्ट के अनुसार, एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, according to section 139. The auditor who is appointed under section 139, he may be removed from his office. First thing first, हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, what the law is saying, he may be, auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term. आप उसे हटा सकते हैं एक्सपायरी से पहले, only by special resolution of the company, लेकिन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, what it states, opening line is, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by special resolution of the company, but after obtaining the previous approval of the central government. इसके लिए क्या करना होगा? After obtaining the previous approval of the central government in that behalf as per rule 7 of the company audit rules. अब स्टूडेंट्स ये सेक्शन जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर सेक्शन बड़ा है तो उसके आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कीजिए. सारी लाइन लर्न करनी कई बार मुश्किल हो जाती है, बेयर टेक्स्ट लर्न करना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो डिवाइड इट इनटू पार्ट्स. आप सेक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर लर्न करें, वो आपके ब्रीफ नोट्स बनते चले जाएंगे. साथ साथ मैं आपको साथ साथ स्टूडेंट्स तरीका भी सिखाने लगा हूं कि ब्रीफ नोट्स बनाने कैसे हैं. अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू, देखिए सेक्शन 141 को मैंने तोड़ दिया, यहां पे ब्रेक डाउन कर दिया इसको. सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, व्हाट इट स्टेट्स कि ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, यही कहा था ऊपर भी हमने. देखिए ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, तो ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, ये पहला पॉइंट बना दिया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया सेक्शन को. सेकंड बात इसमें क्या थी? ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. उसे हम उसकी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, टर्म आपको मालूम है सबको, इंडिविजुअल के लिए 5 इयर्स और फर्म के लिए क्या थी? 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स ईच. तो 5 years and 10 years expiry of his term थी, तो moved from his office before the expiry of his term only, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होगा? Only by special resolution of the company. तो स्टूडेंट्स, ऑडिटर section 140 subsection 1 states that the auditor appointed under section 139, he may be removed from his office before expiry of his term, but only by a special, इसके लिए special resolution आपको पास करना पड़ेगा. Special resolution, as you all know, special resolution as stated in the Companies Act 2013. But for this, an important last point,
आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 4 पार्ट्स में आप इसको लर्न कर लीजिए, तो लर्निंग इस तरह से आपकी आसान हो जाएगी। तो लर्निंग करने का तरीका ये, आप उसके पूरी कंसंट्रेट करें, उसे डिवाइड करें, बार बार से आप उसे लर्न करें, कम से कम 4 टाइम्स एक सेक्शन को जब आप लर्न कर लेते हैं तो वो सीमेंटेड हो जाता है। नाउ आई मूव टू ऑनलाइन क्वेरीज। इफ देयर आर ऑनलाइन क्वेरीज, I will come back to PPT also. Yes, students, coming back to PPT. Section 140 subsection 1 मैंने आपको क्या बताया कि auditor appointed under section 139 may be removed from his office before expiry of his term, that is only by special resolution of the company and after obtaining the previous approval of the central government. So this is all about section 140 subsection 1. I hope everybody is clear with this. This is the removal of section 140 subsection. In other words, removal of auditor before expiry of his term requires this is the way you can prepare your brief notes. Removal of auditor before expiry of his term requires special resolution of the company. If your section 141 states that if auditors are to be removed before expiry of their term, that will require the special resolution and previous plus also, and means plus, ये भी जरूरी है step, previous approval of the central government will be required as per rule 7 of the CAAR audit rules 2014. Now what are the, now having understood section 139 subsection 1, last point याद कीजिए इसमें क्या था कि after obtaining the previous approval of central government in that behalf as per rule 7 of the CAR company audit rules. Now what is the procedure for obtaining previous approval of the central government? Now question which may arise in your mind, what is the procedure for obtaining previous approval of the central government से permission जो अप्रूवल लेनी है उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका पॉइंट नंबर 1 आप नोट कीजिए कि एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर shall be made in form ADT2 and shall also be accompanied with fees as provided in the company's registration office and fee rules 2014. So देखिए आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाइए, इजी देखो नोट्स के लिए। एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मेड इन फॉर्म ADT2, तो इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ADT2 and shall be accompanied with prescribed fees. So what is written in the law? First you read what is written in the law and then prepare your notes like this. The application to the central government in form will be made in form ADT2 for getting the approval of the central government to remove the auditor, and it shall be accompanied with prescribed fees. First point, I hope everybody is clear with this. Second point, students, the application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board. The application shall be made to the central government within 30 days of resolution passed by the board. अब देखो इसको इजी आपने कैसे कर दिया, नोट्स इसके कैसे बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास बोर्ड रेजोल्यूशन एंड देन अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, लर्न करने के लिए आसान। तो एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड। पास बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ने अपना रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसके बाद आप 30 डेज के अंदर अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर अंदर आप अप्लाई कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट याद कीजिए क्या था
एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को आप देंगे फॉर्म ADT 2 में और प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। कैसे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे फॉर्म ADT 2 में। सो पास बोर्ड रेजोल्यूशन and apply within 30 days of the board's resolution for the approval of the central government. Third point is company shall hold the general meeting within 60 days of receipt of approval of the central government for passing. आपको सेक्शन 141 ये कह रहा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर आप हटाना चाहते हैं ऑडिटर को तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब देखो क्या तरीका क्या बता रहा है, पूरा प्रोसीजर बता दिया। द कंपनी शेल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे पहले बोर्ड के रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर हमने फॉर्म ADT 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगा दी विद प्रिस्क्राइब्ड फीस कि आप हमें अप्रूवल दे दीजिए ऑडिटर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। और जो ही हमें अप्रूवल मिली, कंपनी शेल होल्ड, कंपनी, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू कंडक्ट द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल। तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर विच इज स्टेटेड इन रूल 7 ऑफ द CAR। सो कंपनी शेल होल्ड, आप आसान उसको आप ब्रीफ नोट्स कैसे बनाएंगे? कंपनी विल होल्ड द जनरल मीटिंग, कंपनी टू होल्ड जनरल मीटिंग and within 60 days of the central government's approval pass special resolution in general meeting. So 60 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको मीटिंग बुलानी होगी and pass special resolution in that general meeting. It is important, section 140 subsection 1. It is important to note at this stage that before taking any action for removal of the auditor, before expiry of term, the auditor, before expiry of term, अगर टर्म से पहले आप हटाना चाहते हैं तो ऑडिटर को आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि whenever, देखो, the auditor be given a reasonable opportunity of being heard, and this is required by the principle, this is required by principles of natural justice. Principles of natural justice require that whenever you are going to impose any hardship on any person or impose any burden, financial burden on any person, or you are going to cause any hardship to any person, then it becomes your duty to give a reasonable opportunity of being heard. This is the requirement of principle of natural. Principles of natural justice require that whenever you are going to cause any hardship with any person, before opportunity of being heard, why such an act should not be done with that person, why such, if you are going to impose any financial burden on any person, so you should give him a reasonable opportunity, you must give him a reasonable opportunity of being heard, why such financial burden should not be imposed on him. So this is the requirement of principles of natural justice as stated in section 140 subsection 1, that before taking any action for removal before the expiry, the auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard. And students, this is the requirement of principles of natural justice. So this is all about section 140 subsection 1 along with rule 7. I have explained to you fully.
Section 141 states that removal of auditor before expiry of his term will require special resolution of the company plus previous approval of the central government as per Rule 7. And requirement of the Rule 7 procedure for obtaining previous approval of central government is application to the central government for removal of auditor shall be made in Form 82 and shall be accompanied with the fees, prescribed fees. Now I move to the application to the central procedure for obtaining previous approval of central government was the application to the central government in Form 82 and shall be accompanied with prescribed fees. The application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board. Pass board resolution, apply within 30 days of the board's resolution central government. And third point, company will hold the AGM within 60 days of the central government's approval for passing the special resolution. So, and you need to give the auditor who is going to be removed, he be given a reasonable opportunity of being heard. This is a requirement of the principles of natural justice. Students, this is all about section 141. आप साथ साथ brief notes चाहें तो बना भी सकते हैं. Section 140 subsection 2. This is resignation of the auditor. Resignation by auditor. So opening lines of section 140 subsection 2. As per section 140 subsection 2, the auditor who has resigned from the company. The auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of resignation. An auditor who has resigned from the company. Now this is a, you see, this is a lengthy section, subsection. So it is not easy to remember this section. It is not easy to learn. So you need to divide it into parts. I will explain how. And simultaneously मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं कि आप ब्रीफ नोट्स कैसे बनाएं. इसमें भी बताऊंगा आपको. हर एक सब सेक्शन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे साथ साथ आपको तरीका भी बता रहा हूं मैं कि आपको ब्रीफ नोट्स कैसे बनाने चाहिए. So auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of resignation. 30 दिन के अंदर अंदर रेजिग्नेशन के ऑडिटर जिसने की कंपनी से रिजाइन कर दिया है वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करेगा, स्टेटमेंट फाइल करेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर, ADT 3 के अंदर फॉर्म एक स्टेटमेंट बनाएगा. उस स्टेटमेंट को स्टूडेंट याद रखिए कि कंपनी के पास भी फाइल करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करना पड़ेगा. Auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेटमेंट ऑडिटर को, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, he shall file within a period of 30 days from the date of his resignation. एक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी पड़ेगी किसके पास? कंपनी के पास और रजिस्ट्रार के पास. And in case of the company is referred to in section 139(5), और अगर 139 वाली कंपनीज है, मींस गवर्नमेंट कंपनी है, अगर 139(5) याद कीजिए हमने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, अभी भी मैंने आपको बताया था 139(5) इज इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर हैज टू फाइल दैट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट within a period of 30 days from the date of the resignation with the CAG of India. तो CAG के पास भी उसे फाइल करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट का ऑडिटर है. तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो he also needs to file his statement in form ADT 3 with CAG of India also.
अब देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लास्ट में क्या कह दिए, इंडिकेटिंग द, लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स। आपको उस स्टेटमेंट के अंदर एडीटी 3 के अंदर आप इंडिकेट करेंगे कि क्या रीजंस थे और अदर फैक्ट्स थे, एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू रेजिग्नेशन, जो आपके रेजिग्नेशन के लिए रेलेवेंट बातें थी, रीजंस थे और अदर फैक्ट्स वो आपको साथ में बताने पड़ेंगे। तो अब देखो काफी सारी बातें हैं सेक्शन के अंदर, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको आपके ब्रीफ नोट्स के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। देखो सेक्शन 140 subsection 2 provides that where the auditor resigns from the company, his duties are as under. Section 140 subsection 2 provides that where the auditor resigns from the company, his duties are as under. He shall file within 30 days of resignation, 30 दिन के अंदर, within 30 days, very important. तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 30 दिन के अंदर रेजिग्नेशन के पीरियड क्या प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। यू नीड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, और प्रिस्क्राइब स्टेटमेंट भी किसी प्लेन पेपर पर नहीं, उसका हमने कंपनीज एक्ट में फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है, वो क्या है, फॉर्म एडीटी 3। सो फॉर्म एडीटी 3 के अंदर आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑडिटर एक स्टेटमेंट बनाएगा, एंड शैल फाइल विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। उस स्टेटमेंट को 30 दिन के अंदर कंपनी के पास और रजिस्ट्रार के पास आपको सबमिट करना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। और स्टूडेंट्स लास्ट में क्या लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी मैंने आपको बताया, इंडिकेटिंग द रीजंस, इंडिकेटिंग द रीजन, तो यहां पे मैंने हाईलाइट करके आपको, देखो यहां पे नोट्स में आप हाईलाइट कर, इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स। तो आपको रीजंस और अदर फैक्ट्स साथ में बताने पड़ेंगे, एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। सो इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलेवेंट रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। I repeat, section 140 subsection 2 provides that where the auditor resigns from the company, his duty would be he shall file within a period of 30 days of his resignation. He will have to file a statement. He will have to prepare a statement in prescribed form ADT 3, and that statement will be filed with the company and also registrar of companies. And in that statement, students, he will have to indicate the reasons and other facts which are to his resignation. In case of companies referred to in, and also if the companies कैटेगरी 139.5 की कंपनी, अगर 139.5 में स्टेटेड है कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी मींस कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑडिटर शैल आल्सो फाइल सच स्टेटमेंट इन फॉर्म एडीटी 3 विद द C&AG ऑफ इंडिया। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी आप देखिए, याद कीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ था कि CAG, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, 139.5 की कंपनी है, तो CAG के पास भी आपको स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म एडीटी 3 की। सो आल्सो यू नीड टू आल्सो फाइल ए स्टेटमेंट इन फॉर्म एडीटी 3 विद ऑफ इंडिया आल्सो, इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। उसमें आपको रीजंस बताने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, रीजंस एंड अदर फैक्ट्स which are relevant with regard to resignation of the auditor. Section 140 subsection 1 is clear to you all along with the rule 7. Section 140 subsection 2 I have already explained. Now I move to section 140 subsection 3. And section 140 subsection 3 is non-compliance if there is non-compliance of subsection 2.
If the auditor does not file such statement as above, he or it shall be punished. It किसके लिए लगाया? He is for individual auditor, it is for firm of auditors. If the auditor does not file such statement, such statement means statement in form ADT3. तो ADT3 में जो स्टेटमेंट बनाई थी ऑडिटर ने, उसको किसके पास फाइल किया था? उसको फाइल किया था कंपनी प्लस आरओसी के पास। और अगर सेक्शन 139(5) वाली कंपनी थी तो उसको सीएजी के पास भी उसने सबमिट किया था। अब कहता है कि ऑडिटर अगर वो वाली स्टेटमेंट डज नॉट फाइल सच स्टेटमेंट एज अबव मींस सबसेक्शन 2, देन ही और इट, इंडिविजुअल ऑडिटर और फर्म ऑफ ऑडिटर, शैल बी पनिशेबल। तो यहां पे पनिशमेंट भी साथ लगेगी आपको। तो पनिशमेंट यहां पे क्या है? विद फाइन नॉट लेस देन मिनिमम 50,000 रुपीज फाइन विल बी इम्पोज्ड। तो कंपनीज एक्ट ने आपको फाइन भी साथ बता दिया कि 50,000 रुपए मिनिमम, 50,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो 50,000 इज द मिनिमम पेनल्टी, but which may extend to, and it may extend to 5 lakh rupees. So this is section 140 subsection 3. So section 140 special notice if appointment of auditor other than retiring auditor is there. So here we are talking of special notice. Section 140 subsection 4 states that special notice shall be required for a resolution at an AGM appointing as auditor a person other than a retiring auditor. So students, special notice will be required. Special notice shall be required for a resolution at an AGM if I want to appointing as auditor a person other than a retiring. अगर मैं retiring auditor के अलावा कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहा हूं, या और प्रोवाइडिंग, इसमें और देखिए क्या लिखा है, और प्रोवाइडिंग स्पेशली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। इसमें स्टूडेंट्स हम वो वाला केस कंसीडर नहीं कर रहे अगर आपकी टर्म ही खत्म हो गई है तो वो केस इसमें कवर्ड नहीं है, उसको हमने एक्सेप्शन में डाल दिया। एक्सेप्ट देखिए मैंने यहां पे सर्कल कर दिया, एक्सेप्ट के आगे वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड हिज टर्म ऑफ 5 years और 10 years एज द केस में बी, एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स आपको मालूम है, इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 139(2) ऑफ द कंपनी एक्ट। तो स्पेशल नोटिस, आपको स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप रेजोल्यूशन एजीएम पे पास करना चाहते हैं, अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ए पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एक्सेप्ट वेयर द टर्म ऑफ द ऑडिटर हैज एक्सपायर्ड। सो ब्रीफ नोट्स देखिए आप कैसे बनाएंगे। तो स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर ए रेजोल्यूशन एट एन एजीएम। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर ए रेजोल्यूशन एट एन एजीएम फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ए पर्सन अदर देन ए रिटायरिंग ऑडिटर। पहली बात इसमें क्या है कि अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, वो आपका रिटायरिंग ऑडिटर नहीं है। अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ए पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, किसी दूसरे को आप अपॉइंट करना चाहते हैं, या दूसरे को अपॉइंट अभी नहीं भी करना चाहते, या आप एक्सप्रेसली और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली मींस क्लियरली आप प्रोवाइड ये कर रहे हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर को तो हमने अपॉइंट करना ही नहीं है, शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। सो इसमें दो बातें, अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ए पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जरूरत किस चीज की होगी?
स्पेशल नोटिस की, किस चीज की जरूरत होगी? स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए रेजोल्यूशन एट एन एजीएम for appointing as auditor a person other than the retiring auditor or providing expressly that a retiring auditor not be reappointed. Exception इसमें बहुत important, except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or 10 years. अगर 5 year और 10 year आपकी tenure ही rotation, and this will be the case of rotation of auditors. अगर स्टूडेंट्स मेरी 5 साल की टर्म ही खत्म हो गई है या मेरी 10 साल की टर्म ही खत्म हो गई है, तो वो केस हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन में डाल दिया हमने। तो अगर इसके अलावा कोई केस है, रोटेशन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी केसेस होंगे, और आप अगर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं रिटायरिंग ऑडिटर की जगह, या आप क्लियरली आप कह रहे हैं कि हमने रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना, तो उसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 requires a special, there would be requirement of special notice for a resolution at an AGM for appointing an auditor as auditor a person other than a retiring auditor or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or 10 years. So on receipt of notice of such a resolution, अब वो आपको नोटिस मिल गया, the company shall forthwith, special notice आपको मिल गया, कंपनी को मिल गया, तो on receipt of notice of such a resolution, company shall with send a copy to the retiring auditor. It is the duty of the company, तो company shall send a copy to the retiring auditor. So company shall send a copy to the retiring auditor. Second, third point, where a notice is given of such a resolution, where a notice is given of such a resolution and retiring auditor makes with respect thereto representation, अगर रिटायरिंग ऑडिटर अब रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा है कंपनी को, रिटायरिंग ऑडिटर कंपनी को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा है इन राइटिंग के अंदर, not exceeding a reasonable length of course, where a notice is given of such a resolution, नोटिस दे दिया आपने that retiring or some other person will be reappointed in place of retiring auditor or providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed. तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंदर स्पेशल नोटिस आपने दे दिया और स्पेशल नोटिस की एक कॉपी आपने ऑडिटर को भी दे दी। तो where a notice is given of such a resolution and retiring auditor makes, और retiring auditor अब कहता है ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तो रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो रिटायरिंग ऑडिटर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है, वो कहता है मेरे तो इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड नहीं हो रहे हैं। तो where a notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company and requests it notification to members, और ये भी कहता है कि ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है and request that notification to the members of the company, it should be given to the company. So कंपनी की अब ड्यूटी क्या बन जाती है यहाँ पर, ये देखिए, अगर ऑडिटर कहता है कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको नोटिफाई कर दीजिए आप अपने मेंबर्स को भिजवा दीजिए, तो कंपनी की ड्यूटी क्या बन जाती है। सो कंपनी कहता है वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, where the retiring auditor makes representation in writing to the, this is the form। तो आप ब्रीफ नोट्स ऐसे बनाइए क्या, where the retiring auditor makes representation in writing to the company and request, क्या रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, इट्स नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स, कि वो उसको मेंबर्स को नोटिफाई कर दीजिए, नोटिफिकेशन भेज दीजिए इस चीज का। तो कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है, कंपनी शेल
in any notice of the resolution given to members of the company, company shall state the fact of representation having been made. कंपनी ये फैक्ट बताएगी कि ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन हमें मिला है. So in any notice of the resolution given to the members of the company shall state this fact of representation having been made. Company shall, this is how you can prepare the brief notes also. Company shall state the fact of the representation having been made. Or company shall send a copy of the representation to every member of the company. Company shall send a copy of representation to every member, each and every member of the company to whom notice of the meeting is sent. So it is the duty of the company to send a copy of representation to every member to whom notice of meeting is sent. Now, what will happen if a copy of representation is not sent as aforesaid? Because it was received too late or because of the company's default. Students, if a copy of representation is not sent as aforesaid because it was received too late or maybe because of the company's default, then the auditor may require that the representation shall be read out at the meeting. This is what the auditor is requiring, that his representation be read out at the meeting. If a copy of representation is not sent as aforesaid, a copy thereof shall be filed with the registrar. और अगर आपने कॉपी नहीं भेजी मेंबर्स को, तो कॉपी shall be filed with the, आप रजिस्ट्रार के पास से जरूर फाइल करिए. So students, this is all about section 140 of the Companies Act. I have explained to you in detail. Section 140. This is section 140 of the Companies Act. Removal of the auditor, resignation of the auditor, removal of the auditor, and giving of special notice. So what we have discussed in section 140, there are 4 subsections. Subsection 1 stating that auditor appointed may be removed from his office before the expiry of his term only by special resolution, of course after obtaining the previous approval of the central government in that behalf as per rule 7. So auditor who is appointed under section 139, he may be removed from his office before the expiry of his term but only by a special resolution, and after obtaining the previous approval of central government as per rule 7. So you need to pass special resolution of the company plus previous approval of central government, and previous approval of central government, application to the central government will, and it shall be accompanied with prescribed fees. Application shall be made to the central government within 30 days of passing of the board's resolution, and company will hold general meeting within 60 days of the central government's approval, pass special resolution in general meeting, and reasonable. Whenever you are going to do some harsh act, you need to give reasonable opportunity of being heard. So this is the requirement of principles of natural justice. Principles of natural justice require that whenever you are going to impose any financial burden on any person, you must give him a reasonable opportunity of being heard why such financial burden should not be imposed. So auditor be given a reasonable opportunity of being heard. This is the requirement of principles of natural justice. As per section 140 subsection 2,
The auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of resignation. 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को स्टूडेंट्स स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, किसके पास? कंपनी के पास और रजिस्ट्रार के पास, जिसमें रीजंस और अदर फैक्ट्स ऑडिटर बताएगा एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन. So in case of the companies referred to in section 139(5), government company means in case of government company, the auditor shall also file such statement in ADT3 with the C and AG of India also, indicating the reasons and other facts as may be relevant with regard to resignation. If the auditor does not file such statement as above, he be punishable with a fine which will not be less than 50,000 and which will not exceed, which may extend to 5 lakh rupees. Now section 140 subsection 4, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर्स, उसके लिए स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी. Special notice shall be required for a resolution at an AGM for appointing as auditor a person other than a retiring auditor, or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed, except where the term of the auditor has expired. The retiring auditor has completed his term of 5 years or 10 years as the case may be. On receipt of notice of such a resolution, the company shall forthwith send a copy thereof to the retiring auditor, where a notice is given of such a resolution and retiring auditor wants to make representation and requests the notification to the members of the company, where the retiring auditor makes representation in writing to the company and request for its notification to the members of the company. Company shall state having been made, कंपनी बताएगी नोटिस के अंदर, किसी जो भी नोटिस जाएगा मेंबर्स को, उसमें बताएगी कि ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन मिला है हमें, और send a copy of representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent, whether before or after the receipt of the representation of the company. Send a copy of the representation to every member to whom notice of the meeting is sent. If a copy of the representation is not sent as aforesaid, because it was received too late or because of the company's default, the auditor may require that the representation shall be read out at the meeting. Yes, students, this is all about section 140 subsection 4. In next lecture, we will discuss. Yes, students, in next lecture, students, in next lecture we will discuss section 140, section 141, section 142. 141 is on disqualification of auditor and section 142 is on remuneration of auditor. We will discuss in next lecture, and you may find the schedule on Cloud Campus. Thank you very much, students. In case of any query, you may contact us at our email ID or our contact number 01203045 or our email ID is rajeev.sachdeva@ici.in or karuna.bhansali@ici.in. You may also contact at our contact number 01203045 925. Thank you very much, students. Thank you very much.